I was already senior devotee, giving classes, leading the kirtans, distributing books every day. तो जब मैं श्री गौरव महाराज से मिला, पहले से मैं एक सीनियर भक्त था, प्रवचन देता था, किताबें पढ़ता था और कीर्तन लीड करता था. Doing very strict sadhana every day. बहुत सख्त साधना पालन करता था. Reading Prabhupada's books 2-3 hours every day. प्रभुपाद की किताब 2-3 घंटा हर दिन पढ़ता था. For years. सालों सालों. For 5-6 years. 5-6 सालों तक किया. Worshipping Prabhupada Murti in my house. प्रभुपाद के विग्रह की पूजा अपने घर में रोज. Cleaning Prabhupada's rooms in Los Angeles temple. लॉस एंजलिस के मंदिर में प्रभुपाद का कमरा हर दिन में सफाई करता था. Distributing books every day, 6 days a week, morning till night. और 6 दिन हफ्ते में किताबें प्रचार करने जाता था, सुबह से लेकर रात तक. And I meet Srila Govinda Swami and he says, "You're spiritually deaf, dumb and blind." और वह श्री गौरव महाराज से मिलने के लिए हमने कहा तुम आध्यात्मिक रूप से अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो. I was like, wow, okay. That's pretty heavy statement. बहुत भारी बात हो गई मैंने तो मुझे. Right? How do you meet someone in the first 5 minutes they say you're spiritually deaf, dumb and blind? कैसे पहले 5 मिनट में ऐसे व्यक्ति से मिले, पहले 5 मिनट में वो कह रहे हैं तुम आध्यात्मिक रूप से अंधे हो, गूंगे, बहरे हो. You're just repeating like a parrot. तुम तोते की तरह बस बोलते रहते हो. You have no idea even what are you chanting and singing. तुम जो कीर्तन कर रहे हो और जो गा रहे हो इसका कोई तुमका अर्थ ही नहीं मालूम. You're just posing like a devotee. भक्त की तरह केवल नाटक कर रहे हो. Why do you become a real devotee? असल भक्त क्यों नहीं बन जाते? So this word, when you hear from real sadhu, real guru, it's so heavy, it shakes you. तो ऐसे शब्द जब असल साधु से आप श्रवण करेंगे, ये शब्द आपको ऐसे हिला कर रख देगा. It shakes you to the core. आपके जड़ से आपको हिला के रख देगा. If someone is lagu, if someone lied, they can say anything. It's like you won't even take it seriously. अगर कोई लघु है, वो कुछ भी कहेगा, उसको आप बहुत अच्छी चीज बोले आपको गंभीर Someone नहीं has लेंगे. gurutva, लेकिन किसी के अंदर का गुरुत्व है, heaviness, वो भारी potency. शक्ति है. Those words they hit you very deeply. तो वो सब आप बहुत गहराई से जाके. So I saw my Gurudev's words, and they're not hitting me intellectually, sentimentally. मेरे गुरुदेव के शब्द मेरी बुद्धि में, मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा. It's like a heavy, unpalatable truth. एक भारी कड़वा सच था. That's like a sword hitting you in the heart. जैसे एक तलवार कोई मेरी सीने में घुसा दी है. And completely humbling you out. और पूरी तरीके से मुझे विनम्र बना रहा था. At first I was just sitting like this, you know. Let's see what this Maharaj has to say. सीना तान के बैठा था. चलिए देखते हैं महाराज क्या बात करेंगे. I heard all these Maharajas. Let's see what this one will say. चलिए देखते हैं महाराज क्या बताएंगे. So first I was very puffed up. I was thinking I was somebody. सोचता था मैं कुछ हूँ. I was thinking I know something. कुछ सोच रहा था मैं भी कुछ जानता हूँ. And then all my friends, family, temple authorities, everybody's there. अब मेरे सारे दोस्त, मंदिर के बड़े-बड़े अधिकारी, मेरा परिवार सब मौजूद था. They're just, cutting, chopping, falsico. और गुरुदेव काटने लगे हैं, कारकों काटने. Then I started like going like this, you know. और फिर मैं धीरे-धीरे झुकने लगा नीचे. He completely like laid me out on the ground, you know. ऐसा लगा पूरे जमीन पे लेटा दिया उन्होंने मुझे. I remember thinking I'm doing dandavat pranams right now. मुझे ऐसा लगा उन्होंने मुझे दंडवत प्रणाम करवा. Seriously, I really was thinking like that. Because I remember at first I was like this. क्योंकि मुझे याद आ रहा था शुरुआत में मैं ऐसे बैठा था पूरा. Let's see what he knows. You चलिए know? देखते हैं इनको क्या आता है. And the more he's talking, I'm just like. और जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया. That's guru. ये होता है गुरु. Nobody कोई भी in my life पूरे would do जीवन that to me. मेरे साथ ये कर पाया था. Nobody. कोई भी नहीं कर पाया. I was so proud guy. इतना मैं अहंकारी आदमी था. In very short time, इतने कम he समय में completely smashed my falsico. पूरे तरीके से मैंने मिथ्या अहंकार को तोड़ कर रख दिया. Why did you become real devotee? Why are you pretending that you're devotee? असल भक्त कब बनोगे? ये नाटक क्यों कर रहे हो भक्त बनने का? You're just deaf, dumb, and blind now. तुम अंधे गूंगे बहरे आदमी हो. Then Gurudev asked me a question, and I said, I'm deaf.
और जब गुरुदेव ने मुझे सवाल पूछा, मैंने कहा मैं बहरा आदमी हूँ। And he started और laughing. गुरुदेव हंसने लगे जोर से। He's like, this person understanding. Now he understands he's deaf. तो वो समझ गए, ये व्यक्ति अब समझ गया है ये कैसा बहरा आदमी है। He cannot hear anything, cannot understand anything absolutely. ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा, कुछ भी सुन नहीं पा रहा परम सत्य। Just speculating, intellectualizing, बस अपनी बुद्धि लगा के sentimental, emotional, भावुक आदमी है। high opinion of ourselves. खुद को ज़्यादा ही समझता है। We think we know. हम सोचते हैं We're बहुत ज़्यादा जानते हैं, devotees. हम भक्त मिले हैं। We know Shastra. हम शास्त्र जानते हैं, We're quoting Shloka. हम श्लोक बोल देते हैं। You see these devotees giving class on like one Sanskrit word, you know. Oh, very interesting word, you know. देखिए कुछ लोग ऐसे प्रवचन देते हैं संस्कृत एक श्लोक का एक शब्द के ऊपर, बहुत अच्छा शब्द है। They're trying to act like Prabhupada, you know. और प्रभुपाद के जैसा नाटक करने का प्रयास करते हैं। It's like a joke. ये सब नाटक है। So once you meet the real guru, then you can see the difference. तो जब आप असली गुरु से मिलते हैं तब आप अंतर देख पाएंगे। I thought that this Maharaj was like all other Maharaj. तो मैं सोचता था ये महाराज भी दूसरे महाराज के जैसे ही हैं। That's why I didn't even want to go to the class. इसीलिए मैं क्लास में जाना तक भी नहीं चाहता। Because I was already fed up. क्योंकि मैं पहले ही थक I चुका was था। already unimpressed. मैं पहले ही किसी से प्रभावित नहीं था। I had no faith. मेरे पास कोई श्रद्धा ही नहीं थी। So with all of that and not even looking for a guru, can you imagine how surprised I was by that experience? तो मैं कोई अंदाजा ही नहीं था मेरे जीवन में मैं तब ना तो गुरु की खोज कर रहा था कि आप कल्पना कर सकते हैं मुझे क्या I was like shocked मुझे बहुत बड़ा झटका मिला जब because I never expected that. क्योंकि मैंने कभी ऐसे अपेक्षा नहीं की थी जीवन में। And then I understood that Krishna Prabhupada, they're actually fulfilling my spiritual desire by giving me such a guru. और मैं ऐसा में समझ पाया कृष्णा प्रभुपाद मेरी आध्यात्मिक जरूरत को पूरा कर रहे हैं और मुझे गुरु देकर। It's just a blessing, a causeless mercy. ये बस एक आशीर्वाद है जो कि कृपा है। That's a Satguru. वो है सतगुरु। That's Janmi Prabhu said. वो है जन्मे जन्मे प्रभु से ही गुरु। It's not ordinary guru like family guru. ये कोई सामान्य पारिवारिक गुरु जैसे नहीं है। This is Janmi Prabhu said guru, Satguru. जन्मे जन्मे प्रभु से सतगुरु। Once you get mercy to understand what is Satguru, who is Satguru, how any other guru you can say is same. तो जब एक बार आपको कृष्ण की कृपा मिल जाएगी समझने के लिए कि कौन होते हैं सतगुरु, तो कैसे आप किसी भी अन्य व्यक्ति को सतगुरु के रूप में एक समान देख पाएंगे। That's why they don't like me. इसीलिए ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। Because I won't say it's all the same. क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ कि सभी एक समान But हैं। how I can say it's the same? लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ कि सभी एक समान हैं? Is Jagannath Mahaprasad the same as when you cook prasadam? जब जगन्नाथ महाप्रसाद बिल्कुल एक समान है जब आप प्रसाद बनाते हैं। And you take Jagannath Mahaprasad, जब आप जगन्नाथ महाप्रसाद and you लेंगे see how nicely your consciousness becomes purified, और आप देखेंगे कैसा आपका चेतना पूरा शुद्ध हो जाता है। and you know there's some special power in that prasad. और आपको पता है इस प्रसाद में कुछ विशेष शक्ति है। Otherwise, how your whole consciousness became purified? वरना कैसे आपकी पूरी चेतना शुद्ध हो गई। And you're going to compare that to what you're cooking at home, और आप उसको तुलना कर रहे हैं अपने घर में जो आप खाना बना रहे हैं उसके साथ। making some pizza or some roti or something, right? पिज्जा चाहे रोटी बना के। Is it really the same? क्या दोनों एक समान होता है? Can we say? क्या हम ये कह सकते हैं? And then what if your mother says, how dare you say that this prasad is not like Jagannath Puri prasad? और आपकी माँ कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि मेरा प्रसाद और जगन्नाथ महाप्रसाद दोनों अलग अलग है। Your mother will be offended आपकी माँ को बुरा लग जाएगा। unless she's devoted. अगर वो भक्त है तो नहीं बुरा लगेगा। Any other question? Did I answer your question? But this means that you're being trained properly. तो इसका मतलब आपको सही प्रशिक्षण मिल रहा है। And then you're seeing how they're answering. और आप देख पा रहे हैं कैसे वो उत्तर दे रहे हैं। You see, because they're assuming everything already. क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा आकलन कर रहे हैं। So if you don't understand that each word has a scientific absolute consideration, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हर एक शब्द का बहुत ही वैज्ञानिक then you will not तात्पर्य be है। able to decipher and to distinguish between what is real and absolute and what is theoretical or apparent. तो आप भेद नहीं लगा पाएंगे क्या भौतिक है क्या मौखिक है और क्या
साक्षात्कार प्राप्त ज्ञान है और क्या असली ज्ञान है। I already went through this whole apparent training, brainwashing program. मैं पहले इस अपार विचार ब्रेन वॉशिंग प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। I know exactly what is that. मैं बिल्कुल सही तरीके से जानता हूँ ये क्या है। I got saved from that. और मैं उससे बच के I निकल चुका got हूँ liberated from that. और मैं उससे मुक्त हो चुका हूँ I'm not going to apologize for that. और मैं उसके लिए क्षमा भी नहीं मांग करने वाला हूँ। That's a mercy. ये है कृपा। What else? Another thing he was saying that when I asked him like, are you like just like you said, are you able to hear Krishna? He said, yeah, something like I'm able to hear. And he was thinking that what is coming into his head, what you said into his head, it's actually God. That's what he like directly said to me also. Right. Because everybody, if you think you're a pure devotee and you're fully surrendered to Krishna, why wouldn't you think that whatever's coming in your head is coming from Krishna? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं आप शुद्ध भक्त हैं और आपने कृष्णा को पूर्ण शरणागत कर दिया है तो आपके दिमाग में जो भी आएगा आप कहेंगे कि ये कृष्णा से ही आ रहा है। Right? This devotee was saying, oh, I'm telling one crazy lady you should just chant, all day and night, and this other devotee saying, oh, that instruction was meant for me. जैसे मैंने एक पागल महिला को कह दिया कि आप जितनी पागल थी मैंने कहा आप पूरे दिन रात बस हरि नाम की जप कीजिए और दूसरे वक्त में उसको अपने ऊपर ले लिया आप वो बैठ के हरि नाम कर रहे हैं पूरे। Because she came offending everybody. क्योंकि वो आई है सभी लोगों के प्रति अपराध करके। Even she wasn't supposed to come there. यहाँ तक कि उनको तो वहाँ आना तक नहीं चाहिए। She just came on her own. तो वो खुद से ही उठ कर आ गई। And now, anyway, if someone's that determined and comes on their own, you have to give them a chance. तो अगर हो सकता है उतना दृढ़ निश्चय लेके फिर भी वो आ गए तो उनको कुछ तो मौका दिया जाना चाहिए। Showed some kind of determination. क्योंकि उन्होंने अपना कुछ दृढ़ निश्चय दिखाया वहाँ आने के लिए। But then the first thing she's saying, she's just criticizing everybody. और पहले जब उन्होंने बोला शुरू किया सभी के अंदर उन्होंने दो बुराई निकालना शुरू किया सभी को दोष देना शुरू किया। So she's not stable personality. तो उनका दिमाग ठीक नहीं था। So then how this older devotee is taking that instruction for himself? तो कैसे एक जो वरिष्ठ भक्त थे उन्होंने उनको दिया हुआ निर्देश अपने ऊपर ले लिया और वो उसका पालन कर रहा है। So all of a sudden he got in his mind, I have to chant 64 rounds a day. अचानक से उनके मन में दिमाग में ये बात घुस गई कि मुझे 64 माला जप करना चाहिए। And then we say, well, Maya would never tell me to chant 64 rounds a day. हम से ये कहेंगे फिर माया तो मुझे कभी ऐसा नहीं कही कि मैं दिन में 64 माला जप करूं। So that must be spiritual. अवश्य ये आध्यात्मिक है। You see, so Maya dresses up as spiritual. तो माया जो है आध्यात्मिक कपड़ा लगा कर आ जाती है। That's why we make this joke. If your mind says go rob the bank, then you can say, okay, that's Maya. इसलिए हम कहते हैं अगर माया मन में ये बात डाले कि जाके बैंक लूटो तब हम कहेंगे हाँ ये तो माया से है। Some people are crazy enough to say, yes, we need to build a temple. God told me to rob the bank, कुछ लोग इतने पागल हैं उसको भी मान लेंगे भगवान चाह रहे हैं हम जाके बैंक लूटें हमें मंदिर बनाना है चलो बैंक लूटते हैं। That's another category. वो एक अलग कैटेगरी है। But if something telling you, oh, you should chant 64 rounds a day. लेकिन अगर कुछ ये बात मन में आ रही है कि आपको दिन में 64 माला जप करना चाहिए। What if you're Mataji and you're supposed to take care of your husband and your children and the house, and you just say the kids wake up, father wakes up, husband wakes up, and say, where's the Prashad? We've got to go to school, we've got to go to work. So, mother's chanting 64 rounds a day now. जैसे कोई माता जी हैं और उनके परिवार में बच्चे हैं, पति है और परिवार का पूरा काम है, वो सुबह उठते हैं सभी लोग कहते हैं प्रसाद क्या है, और माँ कह रही है मैं 64 माला जप करना है। She became Babaji last night. पिछली रात के बाद बाबा जी बन गए वो। Right? All the kids are like, Mommy. और बच्चे तो कह रहे मम्मी। But chanting 64 rounds a day is Maya? तो क्या 64 माला जप करना माया है क्या? You see how subtle, dangerous it can be? आप देखिए कितना सूक्ष्म कितना खतरनाक हो सकता है ये सब। When my Gurudev was preaching in Africa, in the middle of the class, the African boys, they would just get up and walk out of the class. तो जब मैं गुरुदेव श्री गौरव के साथ अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे तो क्लास के बीच में से ही अफ्रीका के वो जो नए भक्त वो उठ के चले जाने लगे बाहर।
And then my godbrother was complaining, like, how these people are just walking out of Gurudev's class. तो मेरे गुरु भाई ने शिकायत किया कि कैसे ये लोग जो है गुरुदेव के क्लास को बीच में उठ के चले जा रहे हैं. It's offensive. एक तरह का अपराध है. And then he was telling my Gurudev this point, like how these guys just committing aparad walking out of the class. तो मेरे गुरुदेव को मेरे गुरु भाई ने शिकायत की कैसे ये लोग ऐसे अपराध करके बीच में क्लास छोड़कर चले जा रहे हैं. And Gurudev said, you see, they've never been trained properly. तो मेरे गुरुदेव ने उत्तर दिया, इन लोगों को पहले कभी सिखाया नहीं. So they don't know what to do, what not to do. इनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है. So just whatever your mind says, just go, just do that. जो भी उनको मन में कहता है बस वो कर देते हैं. So if you say, I'm fully surrendered to Krishna, I'm devotee of Krishna, my life belongs to Krishna, so whatever I'm thinking from now on, that's coming from Krishna. तो जो मैंने अब कृष्ण को पूरा शरणागत कर दिया है, मेरे कृष्ण के प्रति भक्ति है, अब मैं कृष्ण के प्रति अमित प्रेम है, तो अब मैं जो कुछ मेरे दिमाग में आता है सब कृष्ण से आता है. Then that's why it's said that very senior elevated Vaishnavas, they always get confirmation and reconfirmation. इसलिए कहते हैं बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी बार-बार पुष्टिकरण, बार-बार एक ही बात का पुष्टिकरण लेने का प्रयास करते हैं. Why? क्यों ऐसा करते हैं? Because they know how tricky Maya can be. क्योंकि उनको पता है माया कहाँ-कहाँ छल कर सकती है. So they want to be really sure, really convinced, really strict in their understanding. तो बहुत सख्त होना चाहते हैं, बहुत आश्वस्त होना चाहते हैं, जो समझ रहे हैं So उनको सही they समझ want रहे हैं. repeated confirmation. तो बार-बार एक ही बात को पुष्टिकरण करने का प्रयास करते हैं. Especially when it's very serious type of decision. विशेष करके जब कोई बहुत गंभीर निर्णय लेना हो. Because then you need to be convinced that yes, I'll take a risk now because Krishna wants me to do. क्योंकि वो बहुत आश्वस्त होना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं खतरा वो उठाने वाला हूँ कि कृष्णा मुझसे चाहते हैं, मैं उसके लिए सारा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ. But if your stupid mind, emotion just says something, you're ready to take such a huge risk. लेकिन आपका बेवकूफ मन आपको कुछ करने के लिए कह दे रहा है, तो क्या अपना सारा खतरा उठाने That's how we create the chaos, confusion in our life. इस तरीके से हम अपने जीवन में अफरा तफरी उथल पुथल मचाते हैं. Because we misunderstand it. क्योंकि हम सब गलत And समझते we're हैं. taking it as absolute. और हम सभी चीजों को सत्य मानने लगते हैं. And we're not able to understand how to confirm and reconfirm that. और हम ये समझ नहीं पाते हैं कैसे हम उसको पुष्टिकरण करें, बार-बार उसके बारे में हम Through जानकारी bona fide authorized line. प्रमाणिक आधिकारिक Just going to your friends and just saying, what do you think? And they say, yeah, I think it's all right. अपने दोस्तों के पास आना, उनसे कहना आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे लगता है ठीक ही है. That's not confirmation. ये पुष्टिकरण नहीं होता है. Right? Or if your friend wants to be in Maya with you and they said, yeah, I think it's a good कि idea. आपका दोस्त भी आपके साथ माया में रहना चाहता है, बोले हाँ ये अच्छा सोच रहे हो. Whoa, we got confirmation. हाँ, हम दोनों का पुष्टिकरण हो गया है. All my friends agreed we should, all go to hell together. मेरे सारे दोस्त सहमत हो गए, हम सब साथ मिलकर नरक चलेंगे. So? He's asking how did you got the second installment of mercy? Like first installment of Krishna's mercy, you met Srila Gaur Govind Swami Maharaj. Then now how you got the second installment of the mercy? The second? Second installment of Krishna's mercy. What is the second installment? Yeah. Of mercy? Yes. Is being trained by that personality how to hear properly. तो प्रभु का सवाल है कि जब से सबसे पहली कृपा जो आपको कृष्णा से मिली, श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज से मिले, तो दूसरी कृपा आपको कैसे मिली? तो गुरुदेव बता रहे हैं कि दूसरी कृपा है कैसे आप उस प्रमाणिक गुरु के अंदर में प्रशिक्षण लें, कैसे आपको अच्छे से श्रवण करना है उनसे. So what does it mean to do submissive oral reception? तो विनीत भाव से श्रवण करने का अर्थ क्या होता है? It's one thing just to say, just to hear. एक चीज ये है कहना श्रवण करना. Again, it says not hearing like cats or dogs. और फिर यहाँ बताया जा रहा है कि कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं सुनना है. Or not simply hearing, केवल but realizing and understanding what is being presented. न साक्षात्कार कर पा रहे, समझ पा रहे क्या प्रस्तुत किया जा रहा है. So every benefit from austerity, purification, all the way to Krishna Prema, every single piece of that benefit and advancement comes through hearing. तो ये सारी प्रक्रिया में आदव श्रद्धा से अनर्था निवृत्ति से लेकर कृष्ण प्रेम तक सारा कुछ, ये सारा एक एक चीज आपको कृष्ण श्रवण के माध्यम से. So whatever is to be achieved, whatever is to be understood is going to come through Shravanam. तो जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी समझना चाहते हैं, केवल श्रवण के माध्यम से आएगा. So only one who truly understands that will emphasize Shravanam. तो जो केवल असल में इसको समझता है, वो केवल श्रवण पे जोर देगा. Because they understand that is the means
to everything else. क्योंकि वो समझते हैं यही सारे अन्य चीजों को पाने का माध्यम है. So hearing from Krishna internally and externally and through the Shastra. तो कृष्ण से श्रवण करना भीतर से, बाहर से और शास्त्र के माध्यम से. That is the secret of success. ये है सफलता का रहस्य. Because that means Krishna, Adi Guru, Chetu Guru, he's actually giving you the intelligence how to understand him and come to him. क्योंकि आदि गुरु कृष्ण चैत्य गुरु आपको बुद्धि दे रहे हैं समझने के लिए कैसे आप उनके तक पहुंच सकते हैं. Prabhupada says factually the path of bhakti is the path of hearing. तो बात कहते हैं तत्व में भक्ति का पथ श्रवण का पथ है. Shravanam is first and most important aspect of devotional service. श्रवण भक्ति का सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण अंग है. Without proper Shravanam, you cannot do any of the other ninefold processes of bhakti. श्रवणम के बिना नवधा भक्ति की किसी भी भाव को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे. So they're emphasizing Shravanam. वो श्रवणम पे जोर देते हैं. Without proper Shravanam, you cannot chant properly. You cannot do kirtan properly. सही श्रवण नहीं करने पे आप सही तरीके से कीर्तन नहीं कर सकते. Because consciousness will not be right. क्योंकि अगर चेतना सही नहीं रहेगी. And one's purity and potency and understanding the truth will not be manifested in that kirtan or within the chanting. और उनकी शुद्धता और शक्ति उनके कीर्तन में प्रकट नहीं हो पाएगी. It'll just be mental speculation, nam aparad. ये केवल मानसिक मनोधर्म होगा, नाम अपराध होगा. So what chanting will we do on that? What's the quality of that chanting? तो हमारे उस जप में क्या गुणवत्ता है? So we need this special mercy from Krishna and the Guru and from the Shastra in order to purify the consciousness. तो हमें विशेष कृपा की जरूरत है कृष्णा, गुरु और शास्त्र की हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए. And to give us real faith and understanding in the process. और हमें असल बुद्धि और श्रद्धा देने के लिए इस प्रक्रिया में. Otherwise we're chanting and we're like, I hope Krishna's God. और हम जप कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि उम्मीद है कृष्णा भगवान. I hope these names are connected to Krishna. मुझे उम्मीद है कि ये नाम जो है कृष्णा I से hope we संबंधित है. can hear these names. मुझे उम्मीद है ये सब नाम वो सुन पा रहे होंगे. I hope I'm actually a real devotee. मुझे उम्मीद है कि मैं असल भक्त हूँ. We're going to be doubting every single aspect. हर एक चीज में हम संदेह करना शुरू कर देंगे. Right? Krishna, ourselves, the Guru, the process. We won't have unflinching faith in any of it. कृष्णा, गुरु, प्रक्रिया, अपने ऊपर हमें किसी भी चीज के ऊपर श्रद्धा नहीं होती. Because that faith and understanding comes from Shravana. क्योंकि ये बुद्धि और श्रद्धा श्रवण के माध्यम से आती है. So that's the key to understanding and receiving every other type of spiritual benefit or advancement. तो ये है चाबी किसी भी तरह की आध्यात्मिक समझ, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर पाना, आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर पाना, यही वो चाबी है. I would say that's the second biggest installment of mercy. मैं कहूँगा ये दूसरा सबसे बड़ा कृष्णा का कृपा मुझे प्राप्त. And then the necessity of going through tapodivyam. और ये जरूरत कितनी ज़्यादा है इस तपोदिव्यम से And गुजरने की. understanding the importance of going through that process of purification. और ये इसके महत्व को समझना कितना जरूरी है इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से And गुजरना. not avoiding it, और इससे बच के नहीं निकलना है, but embracing it. बल्कि इसको गले लगाना है. And praying for power of tolerance to be able to go through that fire of purification. और सहन शक्ति के लिए प्रार्थना करनी है कि आप इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर सकें. That tapodivyam is so necessary ये तपोदिव्यम बहुत जरूरी है. to get rid of all of this sinful reaction, ये सारे पाप कर्म के फलों से all of this ignorance, ये सारे अज्ञान से, madness, foolishness, inauspiciousness. पागलपन, मूर्खता, अमंगल चीजों से. That's also important. ये भी महत्वपूर्ण है. And then how to get all of your questions answered and your doubts destroyed. और कैसे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर होगा, सारे संदेह आपके कैसे नष्ट होंगे. And how to understand transcendental knowledge from an absolute point of view, not from an apparent, assumptive point of view. और कैसे आप तत्व विचार को समझ पाएंगे उस दिव्य स्तर से, अपार विचार के स्तर से नहीं. How to have faith in Guru Sadhu Shastra as the ultimate determining factor of what you're trying to understand. कैसे गुरु साधु शास्त्रों के ऊपर पूरी श्रद्धा हो पाएगी जिस चीज को आप दृढ़ तरीके से समझने का प्रयास करें. And I thought I had a lot of strong faith in Prabhupada. और मुझे पहले लगता था मेरे अंदर बहुत मजबूत श्रद्धा है प्रभुपाद के ऊपर. But when I saw the faith that Srila Govinda Swami has in Prabhupada,
My faith in Prabhupada was very small. जब लेकिन मैंने देखा श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज के पास कितनी श्रद्धा है श्रीला प्रभुपाद के ऊपर, तो मैंने देखा मेरी श्रद्धा उसके सामने बहुत ही छोटी He है। had unflinching faith. उनके पास अटूट श्रद्धा है। That means every word from Prabhupada is non-different from Krishna. यानी कि प्रभुपाद के हर एक शब्द कृष्ण से अभिन्न है। That's why when you read these purport, that this is, of course, Prabhupada said Krishna directly gave me every word of this purport. प्रभुपाद ने कई बार कहा है कृष्ण ने सीधे हर एक तात्पर्य का एक शब्द मुझे दिया है। So if you hear Krishna's word within Prabhupada's presentation, then you can understand how Prabhupada is pure by a medium of Krishna. तो अगर आप प्रभुपाद के हर एक शब्द में कृष्णा की मौजूदगी को देख पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि प्रभुपाद कृष्णा के शुद्ध माध्यम हैं। And that is the very qualification of his being parampara. और यही उनकी योग्यता है कि वो परंपरा के प्रमाणित हैं। That's the proof of his bona fide position in parampara. और यही प्रमाण है उनके आधिकारिक स्थिति का इस परंपरा। So that faith and realization in Srila Prabhupada, I got that from my Gurudev Srila Gaur Govinda Swami. और ये श्रद्धा, ये साक्षात्कार श्रीला प्रभुपाद के ऊपर मुझे श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज से मिली। Because he shared his faith. क्योंकि उन्होंने अपना श्रद्धा मुझसे बांटा। Right? Association means sharing faith and realization. शरण का मतलब है अपना श्रद्धा, अपना साक्षात्कार उनको देना। So if we do submissive all reception from such a qualified person who has this level of unflinching faith in Guru and Krishna, by his mercy you can also get the same thing. तो ऐसे योग्यवान व्यक्ति से अगर आप विनीत भाव से श्रवण करेंगे, तो उनकी कृपा से आपके अंदर भी ये श्रद्धा, ये साक्षात्कार आ सकता है। That's satsanga, sadhu sanga. ये है सत्संग, साधु संग। All right? ठीक है? Any last thing? कोई आखिरी चीज? Yeah? Let's let this young lady go first. तो पहले इनको पहले पूछने दीजिए माता। Let's give the ladies a chance. माता जी लोगों को भी मौका हम देते हैं थोड़ा। She wants to talk about her cat. वो अपनी बिल्ली के बारे में बातचीत करना चाहती है। She used to have a cat. उनकी पहले बिल्ली थी उनके पास। She's hoping he went back to Godhead. वो उम्मीद कर रही है कि बिल्ली भगवत धाम चली गई। Not an ordinary cat. सामान्य बिल्ली नहीं थी। Ate a lot of prashad. बहुत प्रसाद खाया था। Krishna, Shri Gurudev. So, like you talk a lot of things about sentimentality. So, as far as I can see myself, that I have a lot of demonic qualities and sentimentality. She's a demon? Yes. Is that what she said? She's like a putana. तो ये कह रहे हैं इनके अंदर बहुत सारे आसुरी गुण हैं और भावनात्मक हैं। ये बहुत गुरुदेव कह रहे हैं, इन्होंने कहा ये एक असुर है, एक पुतना जैसी है। But she looks like a, just a young girl, right? But she's telling she's a putana. ये देखने में एक जवान लड़की की तरह दिखती है, लेकिन असल बता रही है एक पुतना है। Right? She said she's a demon. तो कह रही है कि वो एक असुर है। So, this is actually very painful and disturbing. You don't like being a demon anymore? ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है असुर बनना? That's good. That's a progress. और अच्छा है, तो अब प्रगति हो रही है। Now we're not satisfied with being a demon. अब हम संतुष्ट नहीं हैं असुर बने रह के। Now we want to be devoted. अब हम भक्त बनना चाहते हैं। Yes, but like only Guru can help to chop this technique very heavy. This one? She needs chopping technique. Chopping technique? This is just a bliss. This is absolute nectar. तो कह रहे हैं कि मुझे ना चॉपिंग टेक्निक की जरूरत है, कटाई करने की जरूरत है। गुरुदेव बता रहे हैं ये तो आनंद है। Are you feeling this chopping technique or is it food for your soul? आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ चॉपिंग कटाई हो रही है पूरी, आप लोग आत्मा को खाना मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? In the beginning it's a little like chopping technique. शुरुआत में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कटाई हो रही है, हलाल किया जा रहा है। This sounds a little off. So you don't like the chopping technique? तो आपको ये कटाई का I तरीका want. You want, but you don't like. मुझे चाहिए लेकिन उनको पसंद नहीं है।
she wants it spiritually, but her mind in Fosiko doesn't like it. तो उनको आध्यात्मिक जरूरत है ये, लेकिन उनका मन और उनका मिथ्या अहंकार इसको पसंद नहीं करता है। That's normal. तो ये बहुत स्वाभाविक बात है। So spiritually we know, okay, this is little painful, little disturbing, but anyway, it's good for me. तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम जान रहे हैं ये मेरी जरूरत है, ये बहुत मुझे कष्ट देगा, दर्द देगा, लेकिन ये मेरी जरूरत है। Then you won't grumble and complain. तब आप शिकायत नहीं करेंगे। Once you start grumbling and complaining and we're not appreciating, we're not grateful, then you don't get the benefit. तो जब एक बार हम शिकायत करने लगते हैं, कृतज्ञ नहीं रहते हैं हम, तब हमें इसका लाभ नहीं मिलता है। If we just humble ourselves and listen to unpalatable truth, and we're humbled by that information, then we have a hope. अगर हम विनम्र हो जाते हैं और इस कड़वे सत्य को हम सुनने लगते हैं विनम्र भाव से, तब हम इस सत्य को सहन कर पाएंगे। We don't have to remain demon. तब हमें असुर नहीं We बनेंगे, can become like devotees. हम भक्त बन सकते हैं। But if we're already thinking we're devotee, and the absolute truth is feeling like chopping technique, that's not adding up, you know. लेकिन हम पहले से ही सोच रहे हैं हम भक्त हैं और ये परम सत्य ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें ये काट रहा है, तो ये दोनों सही मेल नहीं खा रहा है। How can the truth be chopping technique? कैसे सत्य जो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको काट रहा है। Prabhupada said only if your conditioned soul is it unpalatable. ये तभी होगा जब आप एक बद्ध जीव है, तब आपको सत्य जो है कड़वा लगेगा। I remember thinking that it was like every day going for open heart surgery. और मुझे याद है ऐसा लगता था हम हर दिन जो है अपना दिल का सर्जरी कराने के लिए जा रहे हैं। Right, it's bad enough if one time in your life you go through open heart surgery, right? पहले ही बहुत दर्द होता है जब जीवन में एक बार आपको हृदय की सर्जरी कराना। That's like already traumatic experience, पहले right? एकदम दर्दनाक अनुभव है वो, एक ही अनुभव। And then when you walk out the front door of the hospital, then you feel like some vulnerable, right? और जब आप हॉस्पिटल के दरवाजे से जैसे बाहर निकलते हैं, लगता है बहुत कमजोर है। And you're going to get in the car or somewhere, but you just feel like, okay, this is like not so strong, you know? और आप जब गाड़ी की तरफ आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, कार में बैठेंगे तो ऐसा लग रहा है अपने Because you just went through open heart surgery. क्योंकि आप जो है दिल की सर्जरी से गुजरे हैं। So you feel very like a vulnerable, very like I just had a major surgery. तो आपको ऐसा बहुत कमजोरी लगती है क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरे हैं। I just gotta go hide in my house. मुझे घर में जाके छुप के रहना है सब। Take some rest, Prashad, gradually build up some strength, थोड़ा right? आराम करके प्रसाद लेके धीरे-धीरे थोड़ी शक्ति बढ़ानी है। So I honestly, I remember thinking that going to my guru's classes was like open heart surgery every day. ईमानदारी से मैं कहूँ मेरे गुरुदेव की क्लास में जाना ऐसा लगता हर दिन जैसे अपनी सर्जरी दिल की सर्जरी करा रहे हैं। So can you go for open heart surgery every day? तो क्या आप दिल की सर्जरी हर दिन कराने के लिए जा सकते हैं? And then the next day you're going to the temple and you're like, oh, I'm going for open heart surgery again today. You और know? अगले दिन आप कहेंगे खुशी से आज मैं अपना जो है दिल का सर्जरी कराने जा रहा हूँ, पूरे खुशी से जाएंगे आप। You'll be like, you'll be like fearful to go to the temple, you know? आपको डर लगने लगेगा मंदिर जाने में भी। Like this might kill me, you know? पता नहीं शायद मैं मर जाऊँगा। Like how many days can you go for open heart surgery? You know? कितने दिन आप अपने दिल का सर्जरी कराने के लिए जा पाएंगे? And I remember, you know how like you're cleaning something with like a wire brush? जैसे आपने देखा होगा कभी जो है Heavy metal wire brush? कांटे वाले ब्रश से आप किसी घिस कर And you किसी put की some सफाई करते heavy हैं chemicals there? और वहाँ कुछ बहुत सारा केमिकल डालते हैं सफाई करने के I लिए। remember thinking that's how it feels. मुझे ऐसा लगता था मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसे घिसाई की जा रही है। So Gurudev every day is just like a wire brush. He's just trying to cleanse my heart and consciousness. ऐसा लगता था गुरुदेव ये लोहे वाली ब्रश लेके मेरे हृदय मेरे मन मेरी चेतना को घिस घिस के साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। So this is not child's play. ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। So if we know this is good for me, I need this is going to benefit me. अगर हमें पता है ये मेरी जरूरत है, मुझे ये लाभ देगा। Otherwise, we want to go from being demon to pure devotee. What would you snap your finger and just automatically you just become like that? तो क्या सोचते हैं आप एक असुर से शुद्ध भक्त की तरफ बढ़ने के लिए जा रहे हैं? बस एक चुटकी बजाएंगे और आप अगले क्षण शुद्ध भक्त बन जाएंगे। Is it so easy and cheap? क्या इतना आसान और सस्ता तरीका है? You go to ISKCON psychologist and you come out, you're like a purified mind and senses, you become pure devotee. ISKCON के मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, आप बाहर आएंगे, पूरा मन और इंद्रिय शुद्ध हो गया, आप शुद्ध भक्त बन गए। That's the process. ये है क्या प्रक्रिया? You go on the Ravana's bridge to heaven.
रावण के जो पुल पे जा रहे हैं आप स्वर्ग the bridge program, bridge preaching program. उनके पुलिस प्रीचिंग प्रोग्राम पुल Yeah, why go through all the rules and regulations, austerities, tapodivyam of this Vedic process? Just take the stairway to heaven, Baba. What are you doing? क्यों इतना कठिन रास्ता तपस्या वाला नीति नियम कठिन तरीका क्यों अपना रहे बस ये सीढ़ी लेके सीधा स्वर्ग में चले जाओ Why are you taking the hard way? ये कठिन रास्ता क्यों अपना रहे हैं So everybody wants to be a pure devotee until we find out what it means to become a pure devotee. सभी लोग शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं जब तक ये समझ नहीं आता है कि शुद्ध भक्त होने का असल मतलब क्या होगा So it's easy just to call yourself a pure devotee. तो ये बहुत आसान है बस कह देना कि मैं शुद्ध भक्त हूँ Sentimentally, भावुक होकर than to actually go through the process of becoming pure devotee. असल में इस प्रक्रिया से कैसे गुजरूं कि मैं शुद्ध भक्त बन सकूं That's why hardly anyone wants a real guru. इसलिए मुश्किल से कोई लोग जो है असल गुरु को पाना चाहते हैं They want probably you're accepting some guru like fashion statement. बात कहते हैं आप लोग गुरु पाना चाहते हैं जैसे किसी फैशन की तरह Oh, I have a guru. I have a spiritual name. मेरा एक आध्यात्मिक नाम है I'm a member in the society. मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ Everything is already met. सब कुछ मेरा पूरा हो गया है Right? But the real guru means a heavy. असली गुरु बहुत भारी होता And है his words are heavy. और उनके शब्द बहुत भारी होते He's हैं not flattering you. वो आपको चापलूसी He's नहीं not करेगा entertaining आपका you. मनोरंजन नहीं करेगा He's not compromising what is the truth. वो सत्य के साथ कोई समझौता He's नहीं not करेगा watering it down. वो पानी मिला के पतला नहीं करेगा He's speaking unpalatable truth. वो हजम न कर सकने वाला So in शब्द है beginning, that's uncomfortable. तो शुरुआत में ये थोड़ा But असुविधा later on, then it's all nectar. बाद में ये पूरा अमृत लगेगा So it went from open heart surgery and purification with a wire brush to like this is just a pure nectar. तो गुजरते हुए दिल की सर्जरी से और कांटे वाले तारों से सफाई करते हुए और फिर धीरे धीरे शुद्धिकरण होते हुए आप पूरे अमृत में परिवर्तित हो But the mode of goodness means in beginning there's some difficulty, some tapodivyam. लेकिन सतोगुण का अर्थ है शुरुआत में थोड़ा तपोदिव्यम तपस्या This करना divine cleansing austerity program. ये दिव्य तपस्या सफाई का कार्यक्रम से But if we go through that, then on the other side, it's all the nectar, it's all spiritual nectar. लेकिन अगर हम इससे गुजर पाएंगे तो उसकी दूसरी तरफ जो है पूरा आध्यात्मिक अमृत है But Maya is cheating us out of that tapodivyam, divine austerity cleansing process. लेकिन माया हमें ठगने का प्रयास कर रही है इस दिव्य तपस्या सफाई की प्रक्रिया से बच के निकलने का प्रयास करा रही है Because we have this like flowery idea about spiritual life. क्योंकि हमारे अंदर ये फूलों से सजी वाली प्रक्रिया हमें लगता है We're आध्यात्मिक just जीवन में। walking on rose petals and the heavenly planets, some smoke, some white wings, like the dove wings, right? तो जैसे हम सोचते हैं कि गुलाब की पंखड़ियों में स्वर्ग में चलना आसपास बादल हो और हंस के जैसे पंख हो ये होता है भक्ति जीवन What's your conception of heaven? तो स्वर्ग का क्या विचार How's है everyone behaving there? कैसा सब लोग कैसा व्यवहार So करते we're thinking that's a spiritual life. हैं हम सोचते हैं वो है आध्यात्मिक जीवन So then when you're hearing a tapodivyam and unpalatable truth and open heart surgery, then we're like, oh man, this sounds too serious, you know? और जब तपोदिव्यम सुनते हैं और कैसे जो है ये हृदय की सर्जरी होगी शुद्धिकरण होगा तब लगता है यहाँ कुछ ज़्यादा ही गंभीर बात This is like too serious. यहाँ कुछ ज़्यादा ही गंभीर है ये सब तो I don't know if I want to sign up for that. मुझे पता नहीं मैं इस प्रक्रिया में जाना चाहता हूँ या नहीं That's why those gurus, they have very few disciples. इसीलिए ऐसे गुरुओं के बहुत कम शिष्य होते हैं Because nobody's attracted for that. क्योंकि कोई भी इन सब चीज़ों से आकर्षित नहीं Most people, they want to be cheated. ज़्यादातर लोग ठगे जाना चाहते हैं And they need to be और cheated. उनको ठगाने की So there's always more cheating gurus. इसलिए ज़्यादातर ठग गुरु ज़्यादा मौजूद होते हैं Right, didn't Prabhupada say? वैसा नहीं प्रभुपाद ने यहाँ In the बताया first statement? पहले ही वाक्य में कहा था There are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entity and the Supreme Absolute Truth. तो जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारे सैद्धांतिक मनोधर्म चल रहे हैं Many philosophical speculations बहुत सारे सैद्धांतिक मनोधर्म कर रहे हैं and certain processes and programs to understand Absolute Truth. और बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं परम सत्य को समझने So is it bona fide authorized way, scientific way, according to Prashad and Shastra? क्या वो प्रमाणिक वैज्ञानिक
तरीका गुरु साधु शास्त्र के आधार पे बनाए Or हुए is हैं? it just going to go on in some kind of speculative, emotional, sentimental, unauthorized way? या फिर बस मनोधर्म मानसिक तरीके से गैर प्रमाणिक तरीके से चलाया हुआ रास्ता है वो? Make sense? आप समझ पा रहे हैं? She doesn't want to be a demon anymore. अब ये और असुर नहीं बनना चाहते हैं। That's a good thing, ये isn't तो it? बहुत अच्छी बात है, ऐसा है नहीं? That's a positive. ये तो सकारात्मक बात है। Before she was enjoying being a demon. पहले उसको मजा आता था ये असुर बनने में। Now because of these classes, now she can't enjoy being a demon anymore. और इतना क्लास करने के बाद अब सोच रही है असुर बन के मजा नहीं आना। Now she has too much information. This is not going to end well. तो उनको ज़्यादा ज्ञान मिल गया, अब ये इसका अंत So अच्छा now नहीं she होने wants वाला है। to just turn it in and not be a demon अब anymore. वो जल्दी से बदल के असुर और बनने नहीं Now रहना she चाहती। thinks maybe better I'd be a devotee. सोचिए बेहतर है मैं भक्त बन जाऊँ किसी तरह। That's good. That's a progress. ये अच्छी बात है, ये प्रगति है। And then we have to hear, go through a purification और process. हमें श्रवण करना होगा और शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। So false ego doesn't like it. तो मिथ्या अहंकार को ये पसंद नहीं आता। But your soul, if your soul is awakened enough, you'll understand this is good for me. लेकिन अगर आपकी आत्मा जागृत है तो वो समझ पाएगा ये मेरे लिए And बहुत I अच्छा है। have to go through, burn off all of these sinful reactions, all these sinful desires has to get burnt out of there. और मुझे इस प्रक्रिया से गुजरना होगा, सारे पाप कर्म की इच्छाओं प्रतिफल से मुक्ति पाने के लिए, जलाने के लिए मुझे इस प्रक्रिया से All गुजरना of this contamination, misconception, all these demoniac qualities, all of this has to get burnt off. ये सारे कलमा, सारे खराब गुण, असत गुण, ये सब जला कर राख करने हैं। How do you think it's going to get burnt off? आपको क्या लगता है ये कैसे जलेंगे सारे कुछ? Like Krishna's just going to like just take it away from him? क्या सोचते हैं कृष्ण जब बस आपसे ये सब अलग कर That's why it says you have to enter into the fire, right, of devotional service. इसलिए कहा जाता है आपको भक्ति के आग में घुसना होगा। Right? Prabhupada gives this example like this rusty iron, right? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जंग लगे हुए लोहे की। You have to put it in a hot fire. आपको उसको गर्म आग के अंदर डालना होगा And it has to become like fire. और उससे आग की तरह बनना होगा। Then all the rust, all the impurity, everything is burnt off of और there. सारा जंग, सारा अशुद्धि उससे जलकर राख हो So जाएगा। all of this false ego, just like Himalayan mountains, ये सारा मिथ्या अहंकार जो है हिमालय पर्वत के जैसा हो it's जाएगा। not little dust on the mirror. ये कोई दर्पण पे कोई धूली नहीं पड़ी है बस। Right? Chetodapanamarjanam, some dust is on the mirror. I was thinking, what's problem with the dust? तो मैं सोचा था दर्पण पे थोड़ी धूल है, समझ नहीं आ रही ये धूल के साथ समस्या कैसी है? You just chant and the dust will go away. बस नाम लीजिए तो धूल पे And निकल then जाएगी। chanting and chanting and chanting. It's like, what kind of dust is this? मैं जप कर रहा हूँ, कैसा धूल है ये? It seems like you're cleaning coal. ऐसा लग रहा था मैं कोयला साफ कर रहा हूँ। Right? The more you're cleaning coal, the more you have more coal, isn't तो it? जितना कोयला साफ कर रहे हैं अंदर और कोयला ही निकल रहा है। So the Gurudev said it's not the dust of it, like heavy mountain layer, गुरुदेव ने कहा धूल नहीं है, मोटा मोटा परत है, पर्वत बन चुका है। like Himalayan mountain. हिमालय पर्वत बन गया है। That means all of that stuff has to get burnt off. मतलब ये सब चीज जला के खाक करना होगा। And somebody just flattering you, letting you do whatever you want and think whatever you want, that's going to burn off all the dust, all the contamination. कोई अगर आपकी चापलूसी कर रहा है, आप जैसा करना चाहते हैं आपको वैसा करने के लिए दे रहा है मनमर्जी, तो क्या ये सारे कलमस को राख कर पाएगा? It's so easy, cheap way. क्या ये It's इतना आसान possible. सस्ता तरीका ऐसा संभव है क्या? We were hoping so, हम उम्मीद कर रहे थे ऐसा ही हो, but then now you find out it's more difficult. लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि और ज़्यादा कठिन है। Then Prabhupada said, I tricked you. तो बात कहते हैं मैंने आप लोगों पर I ठग said, दिया। just come, chant, dance, take prashad, go back to Godhead. तो मैंने कहा आओ नाचो कीर्तन करो प्रसाद लो भगवत धाम चले जाओ। What's the problem? समस्या क्या है? And Prabhupada laughed. He said, I had to little cheat you because none of you would have cared. प्रभुपाद ने फिर हंस के कहने लगे मैंने आप लोगों को ठग दिया, अगर मैंने पहले सब कुछ बता देता आप लोग सब आते नहीं And you wouldn't have stayed. और आप लोग कोई रहते भी नहीं हो। That's why prasadam is so important. इसलिए प्रसाद बहुत जरूरी है। Prasadam made us a devotee. प्रसाद ने हमें भक्त बना दिया। Prasadam is keeping us as a devotee. प्रसाद हमें यहाँ भक्त बना के रखा हुआ है। Would any of us still be here if there was no prasadam? अगर हमें यहाँ से किसी को प्रसाद नहीं मिले कोई भी यहाँ रहेगा ज़्यादा दिन। That's why I always joke. I say, thank God for prasadam. इसलिए मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ अच्छा है कि प्रसाद है हमारे पास। Right?
That's why Prabhupada said, anytime you speak, you have to give them prashad. इसलिए प्रभुपाद बताते हैं जब भी आप कुछ कथा करें आपको प्रसाद बांटना चाहिए. It's like the kid when you take him to the dentist, right? Then afterward they give them like some candy, you know? जैसे बच्चे को जो है दांत के डॉक्टर के पास ले जाते हैं और लास्ट में उसको एक चॉकलेट कैंडी देते हैं. You're like, you did it, you made it, okay, here's a little sweet, you know? Of course, the sweet is why you went to the doctor, but that's another point, right? तो आप आए, आप यहाँ पे अपने दांत ठीक कराया, अब लास्ट में आप मीठा लो और मीठा खा के असल में दांत में सारा प्रॉब्लम है. I listened to all of the type of guru. मैं सभी तरह के गुरु से मैंने सुना. I listened to all their presentations, all their philosophy, all of their understanding. I tried my best. सबका सिद्धांत सुना, क्या समझते हैं वो, मैंने अपना पूरा श्रेष्ठ प्रयास किया उनको सुनने का. And I give them benefit of the doubt. Okay, they're somehow trying to help me. तो और मैंने उनको मौका दिया कि आप मेरी मदद कीजिए मेरे संदेहों में. Maybe that's true, maybe it isn't. But anyway, they're trying to, in their own way, they're trying to help me. हो सकता है वो क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन अपने तरीके से मेरी मदद करने का प्रयास कर रहे थे. But it didn't help me. लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर पाए. And if anything, I became more confused, more disturbed. और अंतिम फल मुझे हुआ कि और ज़्यादा परेशान हो गया, और ज़्यादा मैं भ्रमित हो गया. So I need a real guru. तो मुझे असल गुरु की जरूरत है. This is very, institutionally very unacceptable. तो संस्था में ये सब बात बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाती है. My Gurudev used to go to the temple and say, what kind of guru you want? A guru sent by Maya or a guru sent by Krishna? तो मेरे गुरुदेव मंदिर में जाते थे प्रचार करने के लिए, कहते थे आपको किस तरह का गुरु चाहिए, कृष्णा के द्वारा भेजा हुआ गुरु या माया के द्वारा भेजा हुआ गुरु. So who's preaching like this? Can you go in ISKCON temple and say, okay, we have in ISKCON, we have gurus sent by Maya, most of them, and maybe somebody sent by Krishna. What type of guru do you want? Can anyone come in ISKCON and just preach like this? क्या कोई ISKCON में जाके ऐसा प्रचार कर सकता है? तो हमारे ISKCON में ही बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो माया के द्वारा हैं और बहुत सारे कुछ हो सकता है जो कृष्णा के द्वारा है. कौन जाके ISKCON में ऐसा बात बोल सकता है? I was shocked when I heard him say like this. I was like, how can you say like this? मैं तो मुझे झटका लगा जब उन्होंने ऐसे बात बोला था. कैसे ये That सब बात means he बोल रहे हैं? doesn't care. मतलब इनको कोई फर्क He नहीं पड़ता. doesn't care if he's, politically, institutionally correct. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सही राजनीति कर रहे हैं कि संस्था में सही चीज बातचीत कर रहे हैं. He's not caring, he's not fearing, he's just speaking absolute truth. उनको कोई परवाह नहीं, कोई भय नहीं, बस पूरा सत्य सामने बोल रहा है. I wanted a guru like that. मुझे ऐसा गुरु चाहिए था. And Krishna fulfilled my और desire. कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी कर दी. And I know how effective that was और मुझे पता चला वो कितना प्रभावकारी था. by what he did to me and for me. जो उन्होंने मेरे ऊपर किया और मेरे लिए किया. So any other thing is not going to work. इसके अलावा कोई भी चीज काम नहीं करेगा. Do you understand that? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? Do you accept this understanding? क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं? So don't grumble and complain. तो शिकायत मत कीजिएगा. All right, you're going from being a demon to devotee. What are you complaining about? असुर से आप भक्त बनने की तरफ जा रहे हैं. आप क्या शिकायत कर रहे हैं? No grumbling and complaining. कोई शिकायत नहीं कर रहा है. Mataji's like, now I'm old, I gotta go through this now. माता जी कह रहे हैं मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्या अब मुझे ये सब करना होगा? Why didn't I do this like 30 years ago? ये 30 साल पहले मैंने ये सब क्यों नहीं किया? Okay, anyway, better late than never. चलो ठीक है, देरी सही, लेकिन करना है. So a little grumbling, complaining. अब थोड़ा शिकायत कर रही हो. But old people, they become like that, लेकिन बूढ़े लोग ऐसे ही हो जाते हैं. I find that as you become older, like you're a little bit like grumbling, complaining. देखा हो जब बूढ़े हो जाते हैं उनके शिकायत करने की आदत बढ़ जाती है. Because everything's hurting, क्योंकि सब कुछ तकलीफ देता है. This younger generation, these people, ये आजकल के जवान लोग, युवा पीढ़ी के लोग, right? And the younger generation saying these old people are useless, हमारे जवान पीढ़ी कहता है ये बूढ़े लोग बेकार है एकदम. Right? They call them like boomers, These boomers, these old timers, they don't know what are they talking about, ये पुराने लोगों को पता ही नहीं है कि क्या बात करना है.
And then the old people, because they have some experience, maybe some realization, they say these children are spoiled and useless. और क्योंकि बूढ़े लोगों को कुछ जीवन का अनुभव है, कुछ साक्षात्कार हो गया, तो ये जवान लड़कों को कुछ पता ही नहीं है. They're not prepared for the real world. ये दुनिया को देखने के लिए तैयार ही नहीं है. So everybody's complaining, everyone grumbling and complaining. सभी लोग शिकायत कर रहे हैं. Who's not grumbling and complaining? कौन है यहाँ पे जो शिकायत नहीं कर रहा है? Are you grumbling and complaining back there? यहाँ पीछे आप शिकायत करते हैं? Is your other son grumbling and complaining? आपका दूसरा बेटा शिकायत करता है? He could be fighting for England against the Russians, man. वो जो है They could throw him in the military. मैं अगर हमको सेना में डाल दे तो इंग्लैंड की तरफ से वो रशिया के खिलाफ युद्ध करेगा. He wants to learn about business. They're going to put him on the front lines, you know. तो ये व्यापार के बारे में सीखना चाहते हैं, हम उनको सेना के सबसे पहली लाइन में लगा देंगे. He's going to be fighting with the Nazis against the Russians. तो ये नाज़ी लोगों के साथ मिलकर रूसियों के साथ युद्ध करेंगे. And then he's going to call home, Mommy, I became a Nazi. माँ को बोलेंगे, माँ मैं अब नाज़ी बन गया हूँ. I'm going to Bakhmut. I'm going to Ukraine. अब मैं यूक्रेन में जा रहा हूँ लड़ाई करने. There's a nice cauldron going on over there, you know. Right? You're going to enter into some fire there. वहाँ पे हमें आग में घुसना है. So you can enter the spiritual fire, or we can send you to Bakhmut. तो या तो आप आध्यात्मिक आग में घुसेंगे या फिर हम आपको युद्ध में भेजेंगे. Military fire. आपको सेना की आग में जाना है. You want to go in the military? आप सेना में जाना Get चाहते you हैं? strong? आप शक्तिशाली बनना चाहते Make you like a kshatriya? हैं? आप क्षत्रिय बनना चाहते हैं? Put him there, his voice will change. आप इनको हटा दिए, इनका आवाज बदल जाएगा वहाँ जाने के बाद. He'll come back. Hey, what's up, man? ऐसे मम्मी कहते हैं बाद में, क्या हुआ? Krishna's God. That would be a miracle, huh? तो ये डरा. He went from mommy. तो मम्मी से Krishna's Bhagavan. ये कृष्ण भगवान है. No doubt about it. We need to see this type of miracle, you know what I mean? हमें ऐसा कोई जादू देखने All को the Indian devotees will become devotees now. सारे भारत के भक्त बन जाएंगे. If he becomes like that, everyone will be like, okay, I'm a believer now. अगर ये ऐसा बन जाता है, सब लोग बोलेंगे मुझे पूरा विश्वास है यहाँ. Total believer. मैं अब मेरा विश्वास आ चुका है. All right, any last thing? कोई आखिरी Good? चीज़? सब ठीक है? All right, little better tonight. आज थोड़ा बेहतर हुआ आज की रात. Last night was like some kind of solar eclipse or something, right? पिछली रात ऐसा था जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा We है. had a lot of some kind of energy working against us, हमारे खिलाफ कुछ शक्तियाँ काम कर रही थी. right? It was like a lot of heavy lifting, you know? पूरा भारी वजन उठा रहे थे हम. Didn't it feel like that? ऐसा लगा था कि It नहीं? was just like, oh, just so heavy, dark, man. तो इतना अंधकार गहरा Today भारी it's a है. little lighter, a little brighter. आज थोड़ा हल्का थोड़ा और Last night it was उजाला लग रहा है. I felt like we were in a military bunker, you know? ऐसा लग रहा हम सेना के बंकर में बैठे हैं. Like you're just like bombs are flying, you're just like trying to stay alive, you know? कि बम गिर रहे हैं और हम केवल जिंदा रहने का प्रयास कर रहे हैं. We just gotta get through this battle, कि man. हमें किसी तरह इस युद्ध से निकलना It's है. heavy, बहुत it's भारी dark. है, अंधकार है. But anyway, we're here, you know? हम यहाँ हैं. Somehow we're here. इसी तरीके से हम अंदर बचे हुए हैं. So today's like a little better, right? आज थोड़ा बेहतर है ना? Can you imagine if your first class was last night? क्या आप कल्पना And कर you सकते come in हैं? this room with this kind of energy, you know? It's like, wow, what's going on here, you जब know? आपको कल पिछले रात में जैसा क्लास हुआ, ऐसा अगर पहला क्लास होता तो लगता है कैसी शक्ति है ये. I thought spiritual life is like light and fluffy and bright and simple. मुझे लगा था आध्यात्मिक जीवन बहुत प्रकाशमय, बहुत आनंदमय, सरल है. Like a dust, you know? Like sparkling dust. जैसे चमकती हुई धूल के जैसा. So anyway, you have to take one day at a time. जैसा भी हो एक दिन में एक कदम आगे लेना है. And then every day you just have to try to, you know, go to the next day. और हर दिन हमें प्रयास करना है हम अगले दिन तक कैसे पहुंचे. Don't try to worry about 20 years from now. तो आज से 20 साल तक के बाद में क्या होगा उसका चिंता You'll मत drive करो. yourself mad. और पागल हो जाएंगे सोचते सोचते.
Just take it one day at a time, move towards Krishna, एक दिन में एक कदम कृष्णा की तरफ आगे बढ़ाइए, depend on Krishna, कृष्णा के ऊपर निर्भर and रहिए, Krishna will gradually help you day by day, और कृष्णा आपको हर दिन धीरे धीरे मदद and करेंगे, he'll make your path more and more clear. और वो आपका रास्ता और ज़्यादा साफ करेंगे. So when everything gets very disturbing, very confusing, you have to really break it down, like take one day at a time. तो जब सब कुछ बहुत टूटने लगेगा, परेशान हो जाएंगे, भ्रमित होने लगेंगे, तो आप एक बार में एक कदम लीजिए. Do the best you can in that one day. उस एक दिन में आप जितना सबसे ज़्यादा अच्छा And कर सकते every हैं day वो is a करिए, fresh start, और हर दिन एक नई शुरुआत है, and reorganize yourself, और अपने आप को फिर से व्यवस्थित कीजिए, and rededicate और yourself, फिर से समर्पित कीजिए, and try to make right priorities, और सही प्राथमिकताएं and चुनने का just प्रयास get through कीजिए, that day, और उस दिन से आप आगे and निकलिए, learn what you have to learn, और सीखिए जो आपको सीखने की ज़रूरत है, and just take it step by step. और एक कदम कदम आगे बढ़िए. You start thinking about 5 years, 10 years, 20 years from now, you'll go mad. अगर आप आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे का सोचेंगे, आप पागल हो जाएंगे. Because how are you going to speculate all of that? सोचिए इतना सारा मनोधर्म आप कैसे कर सकते हैं? How we choose, how we make decisions within that process will determine our future. तो इन सारी प्रक्रिया में हम क्या क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये हमारा भविष्य तय करेगा. And those decisions we're making means that every moment we're making decisions. और हर एक क्षण हम कुछ न कुछ निर्णय लेते ही हैं. So you have to break it down moment to moment, day by day. तो इसको एक एक क्षण और एक एक And that दिन will के हिसाब से करना determine होगा. our future. और ये हमारा भविष्य निर्धारित करेगा. Keep it simple, जितना सरल हो सके as रखने का simple प्रयास as कीजिए. possible. जितना सरल हो Maya will try सके to make it as complicated as possible. माया इसको जितना ज़्यादा जटिल हो सके बनाने का प्रयास And करेगी. Krishna's devotees, the process will try to simplify it as much as possible. और कृष्णा के भक्त और प्रक्रिया जितना ज़्यादा इसको सरल बनाने का प्रयास करेगी. Then you can be free from all of this mental agitation, mental speculation. तब आप इस अपने मानसिक विचलन से, मनोधर्म से मुक्ति Because पाओगे. all of that mental speculation creates fear and तो ये anxiety. सारा मनोधर्म भय और चिंता पैदा करता है. Because we're projecting into these situations which we have no idea what is going to be the situation or conclusion. क्योंकि हम ऐसे स्थिति में घुसने का प्रयास कर रहे हैं भविष्य में, जो कि संभावित है, हो भी सकता है, नहीं भी. It'll just put you in anxiety. ये पूरी तरह आपको चिंता में डाल So देगा. better focus on the solution. तो बेहतर होगा आप समाधान में ध्यान दीजिए. Because if we focus on the solution, we have the best chance of passing these tests and getting the best possible outcome in the future. क्योंकि अगर हम समाधान में ध्यान देंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छा मौका है इन परीक्षाओं को पास करने का और एक बेहतर भविष्य के अंदर प्रवेश करने का. But Maya makes us want to worry and be in anxiety and speculate into the future. लेकिन माया हमेशा चिंता में डालना, आगे भविष्य के बारे में मनोधर्म करने के पीछे And means फंसाने so के लिए. much uncertainty, इसके बाद बहुत अनिश्चितता है. especially nowadays. विशेष करके वर्तमान समय में You'll be in complete fear and anxiety, completely disturbed. आप पूरी तरह से भय में, चिंता में, परेशानी में रहेंगे. So you have to stop yourself from doing that. तो आप अपने आप को ही आपको रोकना होगा ये करने And you से. have to focus on what is the solution. और आपको ये ध्यान लगाना होगा समाधान Means क्या to है. be Krishna conscious, to depend on Krishna in the present. यानी कि कृष्ण के ऊपर निर्भर होना, कृष्ण भावना भावित होना And as वर्तमान. much as we can focus on that, that will automatically determine what happens in our future. और जितना ज़्यादा हम उसमें ध्यान लगा पाएंगे वो अपने आप ही निर्धारित करेगा हमारा भविष्य क्या होने वाला है. Krishna is always in the present. कृष्ण सदैव वर्तमान में मौजूद होते As हैं. soon as you speculate into the future, you're without Krishna. जैसे ही आप भविष्य में मनोधर्म करते हैं, आप कृष्ण को छोड़ के And आगे as बढ़ते soon as हैं. we're lamenting about the past, we're also without Krishna. और जैसे ही हम अतीत के बारे में शोक करते हैं, तब भी हम कृष्ण से अलग होकर कर रहे हैं. So hankering and speculating into the future and lamenting the past, this is all Maya. तो उत्कंठा करना, भविष्य के बारे में मनोधर्म करना, ये भी सत्य नहीं है. और शोक के बारे, So अतीत के बारे में शोक it's a करना, waste of time. ये सब समय की बर्बादी है. This lamentation, worrying about the past and reliving the past, it's a tamagun, it's a waste of time. तो शोक करना, चिंता करना, अपने अतीत में बार-बार वापस जाना, उसकी चिंता में डूबे रहना, ये सब Whatever happened, whatever lesson we got from that's we can use that to our advantage. जो अतीत में हुआ वो हुआ, जो भी हमने उससे शिक्षा ले पाए हम उसको अपने जीवन में लाभ लीजिए और उससे Now we आगे have to बढ़िए. move forward.
तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। And if we are Krishna conscious, then we can have a bright future. और अगर हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल If होगा। we're not doing it according to Krishna's way and path and instructions, then it's all going to be chaos. अगर हम कृष्णा के तरीके से कृष्णा के रास्ते में करने का प्रयास नहीं करेंगे And तो we'll पूरी be in तरह constant crisis, constant trouble, constant speculation, trying to solve all of these problems. तो हमेशा कुछ न कुछ आपदा समस्या रहेगी और हम निरंतर समस्याओं का समाधान का बस It's प्रयास also करते a हैं। waste of time तो ये भी समय की बर्बादी to है worry about the future. भविष्य के बारे में चिंता करना। Just deal with the present day to day. वर्तमान में दिन और दिन Moment आगे बढ़ने का to प्रयास moment. कीजिए। एक-एक क्षण में Be in the solution, समाधान में रहने का प्रयास and कीजिए that will, the future will take care of itself. और भविष्य अपने आप ही निर्धारित हो जाएगा। Just projecting into the future without Krishna is a waste of time. भविष्य में बार-बार घुसने का प्रयास करना कृष्णा को छोड़ के समय की बर्बादी And है। it's not going to solve anything. ये कुछ भी समाधान नहीं करेगा And it'll just put you in a state of uncertainty, fear, and और anxiety. ये आपको और ज्यादा अनिश्चितता, भय और चिंता में डालेगा। So that's my best advice to you. तो मेरा ये सबसे श्रेष्ठ सलाह है आप लोगों के लिए। They have a saying in English, the future will take care of itself. और अंग्रेजी में कहावत है भविष्य अपने आप को स्वयं निर्धारित So करेगा। the choices we make day to day, the future will take care of itself. तो हर दिन जो हम निर्णय कर रहे हैं वो भविष्य हमारा अपने आप निर्धारित And हो रहा है। Krishna will say, और कृष्ण अंत में कहेंगे Krishna can do and undo. कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। Prabhupada said, if you want me to be successful, I'll be successful. If you want me to fail, then I'll fail. प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण अगर आप चाहते हैं मैं सफल हूँ तो मैं सफल हूँ, आप चाहते हैं मैं असफल हूँ तो मैं असफल हूँ। That's up to Krishna. ये कृष्ण के हाथ में है। Only Prabhupada said you have to just try. You have to try your best. प्रभुपाद कहते हैं आपको बस अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास So करना है। whatever you have, try your best to understand and accept Guru and Krishna's instructions. जो भी आपके पास है सबसे श्रेष्ठ उसका इस्तेमाल कीजिए गुरु और कृष्ण के निर्देशों को समझ पाने के लिए। Prabhupada said somehow or other try to please the spiritual master प्रभुपाद कहते हैं किसी भी तरीके से आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न and करने का trying to प्रयास करो sincerely execute those और instructions. बहुत गंभीरता से एक निष्ठता से उनके निर्देशों को पूरा And करने then का you प्रयास करो। deserve mercy. और तब आप कृपा के लायक बनेंगे। Not you just sit there, oh I need mercy. बस बैठ के Where's रोके the नहीं mercy? ओ मुझे कृपा चाहिए, कृपा कहाँ है? Just follow the instruction, you deserve mercy, you'll get mercy automatically. आपके निर्देश को पालन कीजिए, पूरा कीजिए, अपने आप ही आप कृपा के लायक बनेंगे। My Gurudev said, don't just sit in the big chair and just cry, where is the mercy? बस मेरे गुरुदेव कहा करते थे बड़ी कुर्सी में बैठ के बस रोते मत रहिए कि हमें कृपा कहाँ है। Right? Go do something. जाके कुछ करिए। God helps those who help भगवान themselves. उनकी मदद करते हैं जो खुद की So मदद करते हैं। boldly go on the battlefield. तो पूरे हिम्मत से युद्ध में जाइए। Make an effort every day, whatever they're asking you to do. हर दिन वो करने का प्रयास कीजिए जो वो आपसे करने के लिए कहते And हैं। learn through the experience, और अपने अनुभव से सीखिए। and mercy will automatically come to और you. कृपा अपने आप ही आपके Spiritual ऊपर आएगी। strength, spiritual intelligence, everything will come to you. आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बुद्धि सब कुछ आएगी आपके Even पास। the whole world can go against you, पूरा विश्व आपके खिलाफ खड़ा हो सकता and है। you'll still continue. और तब भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। If Krishna convinces you, then who will not convince you? तो अगर आपको Who कृष्ण can ने convince you otherwise? अगर कृष्ण ने आपको आश्वस्त कर दिया है तो कौन आपको उससे हिला पाएगा? If Krishna wants to kill you, who will save you? अगर कृष्ण आपको मारना चाहते हैं कौन आपको बचा पाएगा? If Krishna wants to save you, who will kill you? और Who can kill you? अगर कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं कौन आपको मार पाएगा? If Krishna wants you to be successful or unsuccessful, that's up to Krishna. अगर कृष्ण चाहते हैं आप सफल हो या असफल हो ये कृष्ण के हाथ में है। What can we do? All we can do is try. हम क्या कर सकते हैं? हमें केवल Try प्रयास our करना है। best to surrender and try to please Guru and Krishna. अपना That's all. श्रेष्ठ प्रयास करना, शरणागत करने का, गुरु कृष्ण को सुखी करने का बस। Prabhupada said that's the secret of success in spiritual भगवान life. कहते हैं ये सफलता का रहस्य है आध्यात्मिक That's जीवन का। how to get mercy, इस तरीके से आप कृपा को प्राप्त how कर to सकते हैं। deserve कैसे mercy. कृपा के लायक बन सकते हैं। David Deva, wrap it up. Give us the final question. तो Point. अपना आखिरी सवाल दीजिए हमें। Of course, you already got your answer, but anyway, let's अवश्य आपको see. पहले आपको उत्तर मिल गया है लेकिन फिर भी हम देखते हैं। Is everybody happy today? आज सभी सुखी हैं? He's more happy. ये ज़्यादा खुश है, She's not happy enough. वो उतना खुश They're नहीं है, doing all right. वो ठीक She's है, good. ये ठीक है, He's more happy today ये भी than ज़्यादा खुश है आज yesterday. पहले से कल से। Yeah. Everybody happy. सभी खुश हैं। He's wondering why I'm asking. Everyone's happy. वो चिंता कर रहा है सब He's कुछ more क्यों आओ happy. कि वो Maharaj is सुखी more humble. He's more happy. महाराज ज़्यादा विनम्र है आज बहुत खुश है। Old Mataji is grumbling, complaining. बूढ़ी माता जी शिकायत करती करे बैठी है।
She's looking out the window. वो खिड़की खोल के देख Oh, रही है young kids. ये जवान लड़के लोग हैं। You gotta change if you want to be an ISKCON guru. You gotta change. अगर आपको इस्कॉन गुरु बनना है आपको थोड़ा बदलना होगा अपने आप को You gotta be like, you know. She's being heavy. तो ये भारी हो रही है Better late than never. देर Count your blessings. Count your blessings. आपको जो आशीर्वाद मिले हैं उसको आप कीजिए Cultivate an attitude of gratefulness. अपने अंदर एक स्वभाव डालिए कृतज्ञ होने का Try to be appreciative and grateful for whatever blessing we're getting, सराहना कीजिए और कृतज्ञ रहिए जो आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं even though we don't really deserve it. हो सकता है हम उसके लायक भी नहीं हैं Otherwise, we're being negative, वरना हम ऐसे critical, नकारात्मक दोष निकाल रहे हैं complaining, शिकायत कर रहे हैं grumbling, शिकायत कर रहे हैं kicking and screaming negative. हाथ पैर मार रहे हैं नकारात्मक Don't be सोच। so negative. ऐसे नकारात्मक मत सोचिए In English, they say stinking thinking. अंग्रेजी में कहते हैं बदबूदार सोच So don't have stinking thinking. ऐसे बदबूदार सोच मत Don't रखिए entertain stinking thinking. ये बदबूदार सोच को मनोरंजन मत करिए Be positive. सकारात्मक रहिए Now we have solution. हमारे पास समाधान है Before that, how you be positive? इसके पहले आप सकारात्मक कैसे हो सकते थे Make sense? आप समझ पा रहे हैं So, फिर Hari-Krishna. how you go? So Srila Prabhupada has said that without some type of previous pious credit, one can come to Krishna consciousness, or those who came to this movement, they were fortunate they had some type of previous association like that. But then he's also saying that he's creating a bhakti substitute. Can you be a pious demon? तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद ने बताया है कि पूर्व सुकृति के आधार पर कोई भक्ति जीवन में प्रवेश कर पाता है और साथ ही साथ प्रभुपाद ये भी कह रहे थे आप लोगों को कोई भक्ति स्वीकृति नहीं थी मैं आप लोगों का भक्ति स्वीकृति बना रहा हूँ तो गुरुदेव बता रहे हैं कि आपने सुना है कभी कोई पुण्य असुर था पुण्यवान असुर I'm just trying to reconcile that. Like, how can you be a pious demon? तो मैं बस इसको थोड़ा सोचने समझने का प्रयास कर रहा हूँ कोई पुण्यवान हो के असुर कैसे हो सकता है Maybe you're a devotee inside, हो सकता है वो असुर लेकिन भीतर से and then you भक्त था, have the outside is like a demon. लेकिन बाहर ही उसका था एक असुर के जैसा So you don't like the outside. तो हो सकता है आपको बाहर वाला ज्यादा पसंद नहीं आया So then I guess you could be a pious demon, right? तब हो सकता है मैं सोच सकता हूँ वो पुण्य असुरवान था पुण्यवान असुर था So, फिर how did you come here? What was the pious things you did in your life that brought you here? आप यहाँ कैसे पहुँचे अपने जीवन में ऐसा क्या पुण्य किया था कि आप यहाँ पहुँच गए आज Can you remember any pious thing? आपको याद है कुछ भी आपने पुण्य किया अपने जीवन में Huh? 1 or 2. Huh? 1 or 2 1 or 2. That's like yesterday's question, right? Even if you do a little bit of seva. अरे एक तो पुण्य मुझे याद है जैसे कल मैं का सवाल था मैं थोड़ा सा कुछ मैंने सेवा करूँ अल्प सेवा So 1 or 2 pious thing means little bit of seva. एक तो पुण्य मतलब कुछ अल्प सेवा कर Okay, दिया it saves you from the greatest fear, right? The greatest threat. चलो ये ठीक है आपको सबसे महान भय से मुक्ति दिला पाएगा Okay, so you get some credit. तो चलो आपको कुछ आपके पास स्वीकृति है Do you feel better about that now? अब आपको कैसा अच्छा लग रहा है सुन के Don't you think Krishna gave you more than what we deserve? आपको ऐसा नहीं लगता कृष्ण ने आपको ज्यादा दे दिया जिसके आप लायक भी नहीं थे उससे भी ज्यादा दे दिया Can any of us say, you know, we deserve everything we're getting and actually we deserve more? Can we really say like क्या that? हमें से कोई यहाँ कह सकता है हमें जो मिला असल में इसके बहुत ज्यादा पाने के लायक थे हमें किसी कैसे ये मिल गया क्या हम कह सकते हैं Is it not some kind of special, you know, causeless mercy तो नहीं लगता ये कुछ विशेष तरह का हेतु की कृपा हमें मिल गया है that Krishna or Krishna's devotees showed towards us? कि कृष्णा के भक्तों ने हमारे ऊपर दिया ये कृपा
Many people, they preach to us along the way, along the path, isn't it? बहुत सारे लोगों ने हमें कितना प्रचार किया, इस रास्ते में हम आगे बढ़ाया. They gave you some hints, some tips along the way. Everybody was somehow Krishna using them to help us, right? सबने आपको कोई सलाह दिया, किसी तरह से मदद किया. इस रास्ते में कृष्ण ने किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपकी मदद की इस यहाँ पे. So, फिर what is the point? तो आपकी बात क्या है? Are you still trying to feel like you earned your place here in Mayapur? तो अभी भी ये कहना चाहते हैं कि आपने कमाया है अपने मायापुर में यहाँ रहने का अपना जगह. Isn't it better to say we're just running on causeless mercy? क्या ये बेहतर नहीं वो कहना कि भगवान की अहेतु की कृपा से मैं यहाँ हूँ? I mean, if you think of what Krishna and the Guru want for us, how close are we to that? अगर हम ये देखें कि हमसे जो गुरु कृष्ण चाहते हैं हम कितना नजदीक उसके तक पहुंच पा रहे हैं. How close to that standard are we coming? तो वो जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं हम उसके कहाँ तक स्तर So, तक पहुंच पा रहे हैं. what do we really have to be proud about or to take credit for? तो हमारे अंदर अहंकार करने वाला या श्रेय अपने ऊपर लेने की क्या बात है? It says if you do one step towards Krishna, he's taking 10 steps towards you. ऐसा कहते हैं आप कृष्ण की तरफ एक कदम लेंगे, कृष्ण आपकी तरफ 10 कदम लेंगे. Krishna wants us more than we want him. कृष्ण हमें ज्यादा चाहते हैं इसके बजाय कि हम उन कृष्ण को कितना पाना चाहते हैं. That's the problem. यही समस्या है. He's trying like anything to get us. वो पूरा अपना प्रयास कर रहा है सब कुछ हमें But पाने के लिए. we're just hesitating. लेकिन हम ही चल रहे हैं. We're coming like snails. हम Snail's pace. हम घोंगे की चाल चल रहे हैं. Sometimes I ask devotees, how are you doing? They say, well, I'm in the process. कभी-कभी बातों से पूछता हूँ कैसे कहते हैं मैं प्रक्रिया में हूँ. And I always ask, in the process of what? फिर मैं सवाल पूछता हूँ कौन सी प्रक्रिया में? Everybody's in a process. सभी लोग प्रक्रिया में ही हैं. Are we in the process? Are we going to heaven? Or are we going to hell? What कौन सी part of प्रक्रिया the में process are we in? स्वर्ग जा रहे हैं कि नरक की तरफ जा रहे हैं? Which direction are we going? कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? And then how determined are we in that direction? और कितने दृढ़ निश्चय से हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? How convinced are हम we? कितने आश्वस्त हैं? How bold are we? और कितने हिम्मत से हम बढ़ रहे हैं? Some little problem comes, we're like, oh, I can't, you know. This is, what is the word? Some type of hysteria, एक शब्द है emotional hysteria. मतलब भावनात्मक एक बीमारी. Uncontrolled mind and senses. मन और इंद्रिय नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं. Conditioned soul doesn't know what to do, what not to do. बद्ध जीव को पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है. But he's thinking he's a very smart guy, लेकिन ये सोचता है बहुत बुद्धिमान है and he thinks it's all devotional, और ये सोचते हैं सब भक्ति है but it's all Maya. लेकिन सब माया है. Then he had to get heavy reaction. तो उनको भारी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी. So this is not child's play. ये बच्चों का खेल नहीं है. It's not for children. ये बच्चों के लिए नहीं है. This is not for the faint of heart. ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है. So if you're very weak-hearted, you cannot take up this path. कहते हैं अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस सब रास्ते में नहीं जा सकते. Prabhupada says it's like declaring war against Maya. प्रभुपाद कहते हैं माया के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली बात है. Are you ready to declare war against Maya? क्या आप माया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? You want to be revolutionary? क्या आप लोग क्रांतिकारी बनना चाहते हैं? All right. ठीक है. So any last thing? कोई आखिरी चीज? Yes, so basically, even though it's causeless mercy, and we're considering how unqualified we are and what we're trying to achieve and what we're getting, still there's some effort. You know, there's still some. Krishna's saying that And what? there's some effort on our part to have to get some opportunity to get some. Yeah, just do dandavat pranams. That takes some effort.
तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर हम समझ पा रहे हैं हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है भगवान की पूरी तरह है जो इनकी कृपा, लेकिन फिर भी हमारा कुछ Say तो प्रयास something. You're going to get on the ground, भगवान को दिखाना होगा। ठीक है, on your knees, दंडवत प्रणाम कीजिए, अपना घुटना put लेकर your घुटने hands आइए, out, अपना फिर हाथ आगे बढ़ाइए। right? So that's a physically. तो मतलब एक शरीर अपना लगा And then है you got to get your heart and your mind और फिर अभी अपना हृदय और अपना मन भी लगाना to है feel as humble as your body. कि जितना आपका शरीर विनम्र दिखा रहे हैं आप अंदर से भी उतना विनम्र हैं। And then you have to cry to God, to Krishna, और भगवान से कृष्ण से रोना है to somehow or other shower causes mercy on us, तो किसी तरीके से मेरे पर है जो कि कृपा कीजिए। even though we don't really deserve it, होता है, हो सकता है मैं उसका बिल्कुल लायक नहीं हूँ, because there's no other option, there's no other solution. क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं, कोई समाधान नहीं। It's the only last hope. यही एक एकमात्र आखिरी आशा है। That's the reality. ये है सच्चाई। It's just, how much material energy will quickly or more longer bring you to that realization. अब बस यही देखना है कि ये भौतिक प्रकृति कितना जल्दी और कब आपको इस साक्षात्कार तक पहुंचा पाए। That's why it says in the end, everybody's horizontal. इसलिए कहते हैं अंत में सभी को पूरा लेटना होगा। It's either voluntary dandavat pranams, तो अपनी इच्छा से या तो दंडवत प्रणाम करेंगे or you're lying on the funeral pyre या फिर शमशान में अपने चिता के ऊपर लेटेंगे। when they're lighting the torch, जब आग लगाएंगे चिता में, then you're also horizontal. उस समय पूरा एकदम लेटना है। But it's better to practice that horizontal position before the Lord, तो बेहतर होगा वो लेटने का भगवान के सामने पहले कर लिया जाए, मरने से पहले। Better practice sooner. बेहतर होगा पहले ही इसका अभ्यास कर ले। Then you'll be more peaceful lying on the wood, जब आप लकड़ी पे जब आप लेटेंगे तो ज़्यादा शांति से जाके लेट पाएंगे। Because Krishna says, I'll come and deliver you myself. क्योंकि कृष्ण बताते हैं मैं स्वयं आऊँगा आपको मुक्त करने के लिए। That's why devotee is not fearful. इसलिए भक्तों को कोई भय नहीं होता। Everyone else is petrified of death. मृत्यु का सभी को पूरी तरह से भयावह। Everyone is all acting on fear and anxieties because of this idea of death. तो सभी लोग पूरे तरह से भय और चिंता में काम कर रहे हैं इस मृत्यु के भय के कारण। Old age, disease and death. बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। Everybody is very fearful. सभी लोग पूरे भय में रहते हैं। But for devotee, they can live or they can die. लेकिन भक्त या तो जीवित रहे या मरे। If Krishna has more seva, then they'll keep you. तो अगर कृष्ण के पास और सेवा है तो वो आपको यहाँ रखेंगे। If your advancement is as far as Krishna says in this body, then he'll take you out of this body. और आप देखेंगे कृष्णा कि इस शरीर के अंदर आप जितना प्रगति कर सकते थे आपने कर लिया, तो कृष्णा He may extend your life. या हो सकता है आपके जीवन को Sometimes by karma you should have died. कभी-कभी कर्म के अनुसार आपको मृत्यु आ जाना But चाहिए। because you have more devotional service to do, then Krishna may extend your life. हो सकता है आपको और ज्यादा भक्ति करने के सेवा था तो कृष्ण ने आपका जीवन और थोड़ा आगे बढ़ा दिया। Or if you did as much as you can in this body, then he may also say, okay, that's it, get out of this body. या फिर इस शरीर के अंदर आपने जितना जरूरी था सब कर लिया तो कहेंगे ठीक है चलो इस शरीर से बाहर निकलो। So only devotee can be fearless तो केवल भक्त ही अभय हो सकता है and peaceful, और शांत हो even in सकता front of death. है, यहाँ तक कि मृत्यु के भी सामने। So all of this life, all the difficulties of this life is to pass the final test. तो जीवन में सारी मुश्किलें इसी परीक्षा को पास करने के लिए आती हैं। So we want by our nature easy-going life. तो अपने स्वभाव से हम चाहते हैं एकदम सीधा साधा जीवन We चलना। don't want any heavy tests. हम चाहते नहीं है कोई कठिन परीक्षा। But without heavy tests, how do we test our Krishna consciousness? तो कठिन परीक्षा आएगी नहीं तो हमारा कृष्ण भावनामृत का परीक्षा कहाँ से आएगा? And do you want to find out after no heavy tests, at the time of your death, that's when you want to find out how serious Krishna consciousness you have developed? तो जीवन में अगर कोई भारी परीक्षा आएगी नहीं तो मृत्यु के समय में आप परीक्षा लेंगे कि आपने कितने कृष्ण भावनामृत भक्ति प्राप्त की है। And all of a sudden we're screaming and we're not even think about Krishna once. अचानक से हम चिल्लाना शुरू कर देंगे, हम कृष्णा के एक बार भी हमारे मन में विचार तक नहीं आ रहा है। Or you're condemning God, why you're making me suffer like this? या भगवान की निंदा कर रहा है कि क्यों मुझे ऐसे दुख में डाला जीवन में, I deserve better. और ज़्यादा बेहतर मेरे लिए होना चाहिए था। So we're not thinking about all of these things. ये सब चीज़ें हम सोच ही नहीं पाएंगे। We're just thinking about, eating, sleeping, mating and defending, day at a time. हर दिन आहार, निद्रा और भय और मैथुन के बारे में सोचते रहते हैं।
Any other thing? कोई अन्य चीज? This is such a light conversation, isn't इतनी it? हल्की फुल्की चर्चा हो रही है, Right? Light and bright conversation. हल्की फुल्की और प्रकाशमय It's चर्चा। heavy, ये right? भारी है, It's like heavy topics. ये बहुत भारी विषय है। Would you want me to tell you some stories? आप क्या चाहते हैं मैं आपको कहानी सुनाऊं? Some kahanis. कहानी। This is the kahani of how conditioned souls go through process of purification, तो ये कहानी है कैसे कोई बद्ध जीव शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, so that they can realize how helpless, hopeless, and powerless they are, ताकि वो साक्षात्कार कर पाए कितने आशाहीन, असहाय और शक्तिहीन है वो, so that they can cry to the Lord for causeless mercy, ताकि वो भगवान के सामने रो सके अहेतु की कृपा and प्राप्त by करे, that mercy we have a chance to make it, और उस कृपा से हमारे पास मौका है इसको पाने का, otherwise impossible. वरना असंभव है। This is that Leela we're telling you. ये है वो लीला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Is there a more important Leela that we need to hear about? क्या इससे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण लीला है जिसको हमें सुनने की ज़रूरत है? The statue is still there. स्टैचू अभी भी यहाँ खड़ा है। Somebody moved it for an hour or so, but he came back. कुछ घंटे के लिए मूर्ति वहाँ से हटा दिया गया था कि वापस यहाँ मूर्ति डाल दिया गया। Whatever makes you happy. जो भी करो, खुश रहो। All right, any last thing? कोई आखिरी चीज़? I don't want to take advantage of your patience. मैं आपके धैर्य का लाभ नहीं उठाना चाहता। The dead man has come back to life. मरा हुआ आदमी जाग गया है। The dead man is back. मरा हुआ आदमी वापस आ गया है। How do you say there's no miracle? कैसे आप कह सकते हैं चमत्कार नहीं होते हैं? Let's hear your realization. चलिए हम इनका साक्षात्कार सुनते हैं। This should be very ये interesting. बहुत ही दिलचस्प होगा। Who was so merciful that brought you back here? कौन इतना कृपालु था जो आपको यहाँ वापस लेकर आया? Was this Pitamba? पीताम्बर थे वो? Wow, he's like he's your guru. वो आपके गुरु हैं। He's more merciful than I am. वो मेरे से भी ज़्यादा कृपालु हैं। Yeah, you brought him back, right? आप उनको वापस लेकर आए ना? Huh? Who brought him back? कौन इनको वापस लेकर आए? Who? Devaki? Are you blaming Devaki? ये देवकी के ऊपर दोष डाल रहे हैं। Who brought him back here? कौन इनको वापस लेकर आए? Huh? Team effort. Team effort. The British guy said, अंग्रेज बता रहा है कि टीम एफर्ट क्या होता है। come on. क्या हो रही है? The divide and conquer guy is saying team effort. फूल डाला राज करने वाला आदमी कह रहा है टीम एफर्ट में काम हुआ है। He's representing all of the sins of Britain. Adam has to purify it. पूरे ब्रिटेन का जितना पाप है आदम को शुद्ध करना है। He has a heavy burden, इनके ऊपर बहुत भारी बोझ है। but he's prepared to take it for the benefit of the motherland. लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए वो भी लेना चाहता है। How'd you get back here? I want to know this story, man. मैं ये कहानी जानना चाहता हूँ वापस कैसे आया? Who can tell me the truth? कौन मुझे सत्य बता सकता है? I'm curious whose mercy it was. मैं जानना चाहता हूँ जिज्ञासु ये किसकी कृपा से आए? Devaki? Do you know anything about his coming back here? जबकि आपको पता है इनके वापस आने की कहानी के बारे में? Like he went to south of India. He was getting some treatment. Yeah. His health. Yeah. Then he asked if he can come back. Asked who? Ask you. And what did I say? And you said that he can come back, but he cannot stay in the temple. He could make some separate arrangement. Did I say that? I guess I am more merciful than I thought. तो प्रभु बता रहे हैं कि ये दक्षिण भारत में गए अपनी बीमारी को कुछ इलाज कराने के लिए। फिर उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि क्या मैं वापस आ सकता हूँ, और गुरुदेव ने उत्तर दिया आप वापस आ सकते हैं, लेकिन आप मंदिर में नहीं रह सकते, अपने लिए बाहर में रहने की व्यवस्था बनाइएगा। तो गुरुदेव कह रहे मुझे पता नहीं था मैं इतना कृपालु हूँ। Sometimes I forget. कभी मैं नहीं भूल जाता हूँ। All right, so you're back. तो वापस आ गया। Team effort. चलिए मिल के काम हुआ है। Everybody's praying for you. सभी लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So, फिर you're living outside? आप बाहर रहते हैं?
And what's your religion? क्या है आपका साक्षात्कार? Count your blessings and Yeah, you should count your blessings. तो गुरुदेव वो सवाल पूछ रहे आपने कहा अपने आशीर्वाद को गिनना चाहिए। गुरुदेव बता रहे हैं हाँ आपको अपने आशीर्वाद को गिनना चाहिए। We all should. हम सभी को गिनना चाहिए। Yeah. फिर And I want to hear that part more that you were in the class. you want to hear more? But Do you want me to count your blessings? तो गुरुदेव वो पूछ रहे हैं मैं इसके बारे में थोड़ा और सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव बता रहे हैं You got to count your own blessings. क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा आशीर्वाद मैं गिनूं अपना I आशीर्वाद आपको want you to गिनूं। count all of my blessings so I can feel good about myself, you know? वो कह रहे हैं कि आप मेरा आशीर्वाद मेरे कितना वो गिनिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा मेरे बारे में। He had like 1 or 2 and ran out, so he wants me to start making some up, you know? तो इनका जो कुछ कम पड़ जाना चाह रहे हैं मैं उनके लिए कुछ बना के आशीर्वाद बनाऊं। I need to be reminded of some blessings. तो मुझे कुछ आशीर्वाद को याद दिलाने की जरूरत है। Can you count them on one hand? क्या एक हाथ में गिन पाएंगे सारा? So, फिर are you ready for the revolution? क्या आप क्रांति के लिए तैयार हैं? You ready for the revolution? आप क्रांति के लिए तैयार हैं? Are you guys revolutionaries? क्या आप लोग क्रांतिकारी हैं? Sean? श्याम? No? नहीं? I thought the French like revolutions. मुझे लग रहा था फ्रांस के लोगों को क्रांति बहुत पसंद है। He doesn't like guillotines and blood, you know? इनको वो तलवार और खून पसंद नहीं है। Too messy. ये कुछ ज्यादा ही अस्त व्यस्त हो जाता है। That's why he's opting for the spiritual revolution instead. इसीलिए वो आध्यात्मिक क्रांति करना चाहते हैं। It's more pious type of ये revolution. एक पुण्यवान क्रांति है। So, just hear, man. और साथ श्रवण कीजिए, ठीक है? Just hear and just try to understand and try to follow it. बस श्रवण कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और पालन करने का प्रयास कीजिए। That's all. You don't have to say anything. आपको कुछ भी बोलने की जरूरत All नहीं है, right? ठीक है? Just listen, hear, बस pray. श्रवण कीजिए, प्रार्थना Try to कीजिए practice what we're talking about. और वो अभ्यास करने का प्रयास कीजिए जो हम बातें कर रहे हैं, All right? ठीक है? I think that's enough. Thank you very much. I appreciate it. Shri Shri Gwani Thai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhaktivinoda. Shila Gurudeva ki. Now you got your shloka. आपको अपना श्लोक मिल गया। Now you can accept it as authentic, authorized. अब आप स्वीकार कर सकते हैं कि Official. आधिकारिक प्रमाणिक औपचारिक बातें की हमने। Now what's your complaint? अब आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? All right, we're good? ठीक है, हम ठीक है? Why are you sitting on your knees like that? आप अपने Huh? घुटने पे क्यों बैठे रहते हैं? We put some rubber underneath the rug, हम रबर के नीचे so now he's feeling very comfortable. क्या वो नीचे कुछ रबर डाल के रखेंगे ताकि वो विश्वास से बैठ सके। All right. We have Dave is going to give you some prashadam देवा देवा हमको कुछ प्रसाद देंगे because you went to the dentist, you got your operation. क्योंकि डेंटिस्ट के आप गुजरे आप ऑपरेशन करवा A लिए little sweet, तो आपको थोड़ा मिठाई देने की जरूरत like a big kid. He needs a little है। sweet. जैसे बड़े बच्चे को मिठाई देने की जरूरत Hare Krishna. Thank you, everybody. I hope you're feeling better. Some purification. I feel your pain. Hare Krishna. Thank you. है।